Hello students, how are you? So the remaining part of remaining part of emerging trends in IP, I am going to cover it. So the next topic, which I am going to tell you about, this is cloud computing. So cloud computing, is an emerging trend in the field of information technology, where computer-based services are delivered over the internet or the cloud. For the case for their accessibility from anywhere using any smart device, maybe a smartphone. The services comprise software, hardware, servers, database, databases, storage. Uh, these resources are provided by companies called cloud service providers and usually charge on pay per use basis. Like the way we pay for electricity usage, we already use cloud services while storing our pictures and files as backup on internet or host a website on the internet. Through cloud computing, a user can run a bigger application or process a large amount of data without having the required storage or processing power on their personal computer, as long as they are connected to the internet. So, through cloud computing, a user can run, bigger application, as I have told you, and besides other numerous features, cloud computing offers cost effective on demand resources. जब ज़रूरत हो उस टाइम पर भी आप डिमांड कर सकते हैं and this is cost effective thing, so you can buy as per your need. A user can avail need based resources from the cloud at a very reasonable cost. So what are the cloud services हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम पिछले 2 सालों से क्लाउड सर्विसेज के बारे में बात करते आ रहे हैं. सो ए बेटर वे टू अंडरस्टैंड द क्लाउड इज टू इंटरप्रेट एवरीथिंग एज अ सर्विस. A service corresponds to any facility provided by the cloud. There are three standard model to categorize different computing services, which are IaaS, infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जिस सिस्टम पर आप काम करना चाहते हैं वो जो उसका एनवायरनमेंट है, उसके जो रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए. दिस कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. The IS providers can offer different kind of computing interfaces such as servers. यानी जो प्रोसेसिंग के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो IAS के अंडर में आती है. मे बी वर्चुअल मशीन, storage and backup facility, network components, operating systems, or any other hardware or software. Using IIS from the cloud, a user can use the hardware infrastructure located at remote or local. Deploy and execute any software application on the cloud infrastructure. They can outsource the hardware अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं. हर चीज़ आपको इस कैटेगरी में मिल सकती है आईएएस के अंदर, जिसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिक्योर करने की बात करते हैं. दूसरा हमारा आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. किस प्लेटफॉर्म पे आप काम करना चाहते हैं, क्या प्लेटफॉर्म चाहिए होगा आप क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, उस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें. थ्रू दिस सर्विस, इस सर्विस के द्वारा यूज़र कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट
an application without worrying about the underlying infrastructure and their setup। यानी यहाँ पर आपको कोई भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा अगर आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं। दैट इज़ PaaS प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट टू डेवलप। यहाँ पर आप इवन माई एसक्यूएल एंड पाइथन का प्रोग्राम की कनेक्टिविटी प्रोग्राम करना चाहें तो डेट उसके लिए आपके पास यहाँ पर अपाचे सर्वर अवेलेबल होगा, आपके इंटरनेट पर अपाचे सर्वर अवेलेबल होगा और उसमें माई एसक्यूएल बड़ी आसानी से चलते हैं। एंड पाइथन भी आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यूजिंग these two you'll be able to create the application. Thus, we are not required to install MySQL and Python on the cloud, nor do we need to configure the web server like Apache is already there. In PaaS, the user has complete control over the deployed application and its configuration. It provides deployment environment for developers at a much reduced cost, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? यहाँ पर आप जो कंप्यूटिंग के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत, क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, वो आपको जो सॉफ्टवेयर होंगे वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। SAS प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप क्लाउड कंपनी में काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो बड़ी आसानी से लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर आपको या उसका सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराना ये SAS का काम होगा। वाइल यूजिंग गूगल डॉक्स का है, गूगल डॉक्स में या माइक्रोसॉफ्ट 365 या ड्रॉपबॉक्स, ये सारी जो हैं क्लाउड सर्विसेज हैं जिसके लिए आपको कोई फ्लॉपी, आप ये सोचिए कि ना तो आपको इसको हार्ड डिस्क में सेव करके रखना है, क्योंकि गूगल डॉक्स आपका हार्ड डिस्क में सेव नहीं होता, गूगल डॉक्स आपका क्लाउड में रहता है। ऐसे ही ऑफिस 365 भी क्लाउड सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की, तो इनको किसी भी हार्ड डिस्क वगैरह में सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज दे आर अवेलेबल ऑन द क्लाउड। तो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर का SAS का मतलब है कि जहां आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बात करनी है, PS का मतलब है जहां पर आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बात करनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में IaaS के बारे में बात करनी है। तो ये तीन चीज़ें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आती है ग्रिड कंप्यूटिंग। ए ग्रिड इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क। अब ग्रिड with a combination of the grid, network geographically dispersed and heterogeneous computational resources as shown in the picture. Unlike cloud, whose primary focus is to provide services, a grid is more application specific, किसी particular application के लिए, and creates a sense of virtual supercomputer। मीन्स स्पीड होना चाहिए और आपका क्लाउड होना चाहिए, तो इस ग्रिड में ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी विद एन एनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। द कंस्टिट्यूएंट रिसोर्सेज आर कॉल्ड नोड्स। These different nodes temporarily come together to solve a single large task and to reach a common goal. So nowadays, countless computational nodes ranging from handheld mobile devices to personal computers and workstations are connected to local area network or internet. Therefore, it is economically feasible to reuse or utilize their resources like memory as well as processing power. The grid provides an opportunity to solve computationally intense scientific and research problems without actually procuring a costly hardware. So, grid is of two types. Data grid, जहाँ पर आपको डेटा के बारे में बात करनी है, यानी जहाँ पर कुछ सेंट्रलाइज सर्वर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर के बारे में बात करनी है, एंड प्रोसेसर के बारे में बात करनी है। तो CPU और प्रोसेसर ग्रेड वेयर processing is moved from one PC to another, needed or a large task is divided into subtasks and allotted various nodes for parallel processing.
So this is your grid. To set up a grid by connecting numerous nodes in terms of data as well as CPU, a middleware is required to implement the distributed processor. So मिडलवेयर के लिए हम क्या करते हैं, इस साइट का यूज़ करके हम उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, एक ग्रिड को बनाने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट इज दिस इज HTTP toolkit.globus.org/toolkit. इससे हम ग्रिड डेवलप कर सकते हैं. लास्ट आता है हमारा ब्लॉकचेन्स. ब्लॉकचेन्स का मतलब सीधा सीधा ये है कि जितना भी आपका सिस्टम है उसको थोड़ा सा कॉन्क्रीट एंड सॉलिड बनाने के लिए हम इस सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम सेंट्रलाइज सर्वर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर के बारे में भी बात करते हैं. तो बेसिकली जो एम है, वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज. अब ये जो सर्वर की हम बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज एंड शेयर डेटाबेस. आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम दो तरह के सर्वर्स यूज़ करते हैं. एक तो हमारा सेंट्रलाइज सर्वर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर होता है. डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर में आप ये देखिए कि अगर सेंट्रलाइज सर्वर में किसी तरह से प्रॉब्लम आती भी है तो इन दैट केस योर डेटा इज लॉस्ट. बट if there is this distributed server, it means every server has a copy of the data. If somehow one server is lost, other server can support it. So this is your blockchain figure. The most popular application of blockchains is technology is in digital currency. Due to its decentralized nature with openness and security, blockchains are being seen as one of the ways to ensure transparency, accountability, and efficiency in business as well as in governance system, healthcare, and जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए या उसमें काम करने के लिए ये जो है आपकी ब्लॉकचेन्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं. तो बस इसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है. तो दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ द लेसन. तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें IoT है या WOT है या फिर वर्चुअल रियलिटी है या ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसके बारे में पता कर लेना चाहिए. और जो ब्लॉकचेन है इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. बाकी क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है. तो डेफिनेशन बेस्ड आपको काम की बातें याद करनी चाहिए. इसके अलावा जो आपके जो सिस्टम्स हैं जिसमें आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं, वो भी आपको IaaS एंड PaaS एंड SaaS के बारे में पता होना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड दिस इज the end of the unit. So we'll be meeting in next video with some other topic. Till then, bye.